Good afternoon, everyone. Uh, how are you all? I hope you are all fine. Good. So, students, let's start today uh, topic. So, in today class, we discuss about new chapter which related to political science. So, let's go through. So, first of all, I have some activity for you. You have to answer this particular activity. You have to involve in this particular activity. Yes, students. So first of all, like uh, my first question is situation of women before 100 years. So basically situation of women before 100 years. Yes, students. What do you think? So can we say in 100 years before humans कि जो जितने भी humans थे उनको बहुत सारे sacrifice like they are faces so many different rigid prathaएं. So all these things and हम कह सकते हैं कि जो एक child marriage है, they also face child marriage, sati pratha, and so all these faces. But situation of women in 2022. So basically we can say that in situation women 2022 is better than 100 years ago. उससे जो पहले का अब जो है जो एक सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में फॉर वुमेन्स वो काफी बेटर हो चुका है बिकॉज ऑफ education system is developed and mindset of people are changed. जो लोगों का जो माइंडसेट था, जो एक मानसिकता था, वो अब जो है बिल्कुल रिजिड नहीं, जो है कि वो फ्लेक्सिबल है. So all these things related to this particular topic, we can say in situation of 2022. Okay, this type of scenario. But जो आज से 100 साल पहले जो है वो काफी ये चीज नहीं थी. माइंडसेट ऑफ पीपल इज वेरी रिजिड, जो कभी चेंज नहीं होता था, नॉट फ्लेक्सिबल. सो बट जो अब है, अब जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन भी काफी हमारे जो स्प्रेड हुआ है उसका एजुकेशन का, और लोगों की जो एक सोच है वो बदली है. बट पहले जो था, लोगों का ये मानना था कि जो वुमेन्स हैं वो बस जो है उनका जो एक रिलेशन है वो बस जो घर तक ही है. पर जो अब है ये माइंडसेट चेंज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ अवेयरनेस. तो जो अवेयरनेस है वो फैलती, जो स्प्रेड होती जा रही है अमंग द सोसाइटी. ओके, सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में, अमंग द पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. So all these things. So yes, student, very good. Good involvement from your side. So students, now in this first module we discuss about human and caste system. Okay, students. So we discuss about human and caste system. So first of all, we can say that. So जैसे कि हमने अभी बात भी किया, जो ये क्या है बेसिकली जो मतलब 100 साल पहले और अब के समय में कितना अंतर हो चुका है हमारी सोसाइटी में. व्हाट डिफरेंस वी कैन फील टुडे एंड बिफोर. सो कैसे तो हम ये कह सकते हैं पहले का तो जो एविडेंस है हमारे पास, हिस्ट्री, फिर हम कह सकते हैं जो हमारा लिटरेचर है, फिर इन सब हर चीज में जो जिक्र है जो हमारे सोसाइटी का, उनके बारे में बताया गया है. तो वी कैन से दैट इन 100 to 200 years ago क्या होता था, no access to education. तो women's have no access to education. उन्हें पढ़ने का एक अधिकार नहीं था. They have no any rights right to education, not right to speak properly also. उन्हें बोला नहीं जाता था, वो अपने लिए जो है आवाज नहीं उठा सकती थी. तो उनके लिए बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी में चीजें था. ठीक है, और हम कह सकते हैं जैसे कि we can say also that women's had no right to choose their husbands as well as. तो जो उसके साथ मतलब जो लाइफ टाइम रहने वाला फिर वो भी उसे चूज करने का एक अधिकार नहीं दिया जाता था. जो हमारी सोसाइटी में जो
हमारे इसमें। दैट्स वाई लाइक अर्ली चाइल्ड मैरिज, तो उन्हें जो है ये चीज भी इशू फेस करना पड़ता था, उन्हें जो है पहले अर्ली चाइल्ड मैरिज करना पड़ता था, तो इनसे गुजरना पड़ता था। सो दैट्स वाई लाइक वुमेन्स ऑलवेज लाइक, हम कह सकते हैं कि उन्हें इन सब समस्याओं का लाइक दे हैव ऑलवेज फेस दैट लाइक चीप लाइक वी कैन से लाइक, ये जो छोटी छोटी या फिर सस्ती जो कह सकते हैं कि जो माइंडसेट है उनका ये उन पे काफी असर पड़ा, और ये जो है इन सब चीजों का हमेशा सामना करती रही। और लाइक वी कैन से दैट लाइक पीपल कुड हैव मोर देन वन वाइफ, और जो लोग थे जो इसमें तो उनको क्या था, एक से ज्यादा पत्नियां वो अडॉप्ट करते थे, बट सती सिस्टम फॉर द विडो, और जो एक सती सिस्टम था वो विडो के लिए था। तो मीन्स कि जो जैसे कि उसके पति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या है, उसे जो है अपने आप को जो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, लाइक इन द फायर, तो इन्हें जला दिया जाता था। तो लाइक ऑल दिस लाइक कह सकते हैं कि इतनी बुरी जो को हम कुप्रथाएं कहते हैं, तो ऐसी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में थी, लाइक वी कैन लाइक ऑल द फेसेस, तो सो नो राइट्स इन द लाइक इनहेरिटेड लाइक प्रॉपर्टी, और यहाँ तक कि उनको एक जो उनका प्रॉपर्टी होता था पर्टिकुलर लाइक उनके फैमिली का, उनमें भी उन जो कह सकते हैं कि जो वुमेन्स है उनको कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। दे हैव नो एनी राइट्स लाइक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एंड देन एज वेल एज नो वोटिंग और इलेक्शंस, यहाँ तक कि उन्हें इन सब चीजों का भी कोई हक नहीं था। मैंने जैसे आपको कहा स्टार्टिंग में, मतलब उन्हें बेसिकली जो एक जो नॉर्मल हक था वो की है कि आपको एक रिलेशन बना के रखना अपने घर तक ही, इसके बाद इसके अलावा जो है आपका जो कोई काम नहीं है। तो लाइक ऑल दिस लाइक माइंडसेट दैट टाइम पीपल, तो उस समय जो लोगों की जो मानसिकता थी वो कुछ इस तरह से, बिकॉज ऑफ लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ओके, सो ऑल दिस लाइक issues faced by like Indian women or in society. Okay, students. So and as well we can also said that no going out of the houses for job or study. जैसे मैंने आपको बताया कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलने को उन्हें मंजूरी मिलती थी, तो वो जो जा पाए या फिर वो सेल्फ डिपेंड हो पाए, मतलब जो है खुद पे खड़े हो सकें, खुद को स्टैंड कर सके सोसाइटी में, ये हर एक चीज जो राइट उनसे छीन ली गई या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई गई। तो लाइक ऑल दिस बिफोर लाइक 100-200 एगो से पहले की बात है। ओके, सो लाइक ऑल दिस लाइक वुमेन्स और उनके कास्ट सिस्टम को भी उन्हें फेस करना पड़ता था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लाइक दे ऑल्सो फेस्ड कास्ट सिस्टम, है ना, उन्हें बैकवर्ड मतलब जो एक तरह से समझो कि जैसे कास्ट सिस्टम को करना पड़ता है, जैसे कि हम छोटे कास्ट को लाइक वी कैन, जैसे कि वो लोग करते थे कि उन्हें ज्यादा अधिकार नहीं मिलता था, उसी तरह जो वुमेन्स थी उनके साथ भी ऐसा पेश आया जा रहा था। तो लाइक ऑल दीज थिंग्स फेस्ड बाय लाइक इंडियन वुमेन in our society. Okay, students. So this thing clear now? Yes or no? Yes, very good. So we have to move next. So basically अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, तो ये कास्ट सिस्टम में भी इन्होंने बहुत हमें वो किया है, लाइक वी कैन से दैट, अगर हम बोले तो जैसे कि अगर बात करो वी कैन से जैसे कि लाइक जो एक वो है लाइक, अगर हम बात करें जैसे कि कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था। कास्ट सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड द पीपल ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उनके जो काम है, उनका काम करने का जो वो है, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उन्हें बांट दिया गया था। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण्स हैं या फिर जैसे कहते हैं कि उन्हें क्या था, उन्हें सिर्फ काम दे दिया गया था जो प्रिस्ट होंगे या फिर वो एकेडमिक्स से रिलेटेड होंगे या फिर वो लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, तो उन्हें सिर्फ पढ़ने लिखने का काम मिला था है। एंड देन लाइक वी कैन से जो सेकंड जैसे हमारा वो कास्ट सिस्टम आता है वो क्षत्रिय, क्षत्रियो को क्या माना गया था, सिर्फ जो है वो वॉरियर्स हैं, वो सिर्फ जो लड़ाई या युद्ध में उनका काम है। एंड देन वैश्य, तो उनको सिर्फ जो एक तरह से कि कह सकते हैं कि जो व्यवसाय में इन्हें माना गया था कि ये सिर्फ व्यवसाय कर सकते हैं। एंड देन लाइक फोर्थ वन शूद्र, दे आर लाइक कॉमनर्स, पीजेंट्स एंड लाइक सर्वेंट्स, तो ये नौकर के काम करते थे, जैसे वो कुम्हार कुछ कर सकते थे, अलग अलग जो काम उनका। एंड देन लाइक लास्टली जो है वो आते थे अनटचेबल, जो मतलब आउट ऑफ कास्ट, लाइक स्ट्रीट स्वीपर एंड देन लैट्रिन लाइक क्लीनर्स, तो इन सब उन्हें माना जाता था कि सबसे छोटा जो है हम कह सकते हैं कि, या फिर सबसे वो चीज जो उन्हें माना जाता था। तो लाइक ऑल लाइक उनके जो
उनको ऐसा माइंडसेट करवा दिया गया था, उनको ऐसा बना दिया गया था ताकि जो है वो अपने उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन वो करता रहे, और उन्हें जो है जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से उन्हें बांट दिया गया था। तो लाइक ऑल दिस लाइक बेसिस ऑन देयर ऑक्यूपेशन, तो उनकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बांट गया था। तो लाइक दीज ऑल दिस लाइक हम कह सकते हैं कि जो सिनेरियो था हमारा सोसाइटी का, सो ऑल दिस लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन लाइक अर्लियर टाइम्स आल्सो। सो these things, so this thing clear now, this concept caste system? Yes, students, very good. So we can move further. So like students, I have one like question for like elaboration purpose. So how are women victim of rigid caste system like of India? तो like आपको क्या लगता है कि जो वुमेन्स है वो कैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइक कि कास्ट सिस्टम फेस कर रहे हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा हो रहा है, मतलब कि वो चीज वो अभी तक जो जैसे वुमेन्स है तो उन्हें कास्ट सिस्टम फेस करना पड़ रहा है कि वो छोटी है तो उन्हें उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, या फिर उन्हें दे डोंट हैव राइट टू गेट लाइक नॉलेज, या दे डोंट हैव गेट लाइक राइट टू एजुकेशन। सो लाइक अब क्या लगता है, तो इसमें क्या ऐसे होते होंगे, हाउ वेयर वुमेन्स विक्टिम ऑफ द रिजिड कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया? So like we can say that we key because like according to like government data, like around 10 like around 10 Dalit women and like girls are like raped daily across India. उन्हें ऐसे चीजों से फेस करना पड़ता था। However, like the real figure is estimated to be far higher, as only a small like proportion of like crimes are reported, and like conviction rates remain like absolutely low, and the Dalit community like resides at the like lowest, as well as like lowest rung of India caste hierarchy, a class system had like that categories people into groups and imposes a rigid social status. India law like prohibits discrimination based on caste or gender. However, our reach has uncovered systematic problem with prejudice, like patriarchy and corruptions. So like all these like face problem by humans. तो ये चीज जो हमारे सोसाइटी में चल रहा था, इन्हें काफी बदलना जरूरी था हमारे, है ना? तो लाइक इनको बदलने के लिए क्या हुआ आखिरकार, क्या और चीज किया गया, या फिर कौन आए आए जो इनका माइंडसेट चेंज करवाया, या फिर कहते सोसाइटी में रिफॉर्म लाए? तो चलिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तो जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सम क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। जैसे कि हमने पढ़ा अभी उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, लाइक जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी उनके बारे में जाना है, देन वी आल्सो नो दैट लाइक कास्ट सिस्टम आल्सो, और जो वुमेन्स भी कैसे फेस करती हैं वो भी हमने देखा। लाइक इन दिस मॉड्यूल लाइक वी कैन वी हैव टू वन क्वेश्चन लाइक आई होप यू आर आंसर दिस particular question, like suppose you are like born in 1889 in a small village of India, what handy like hardships and difficult situation you face being born as a woman? आपको क्या फेस करना पड़ेगा, लाइक आप जो कि उन्हें फेस करने की आप वुमेन्स लाइक अगर हम बात करें तो हमें ये सब चीज फेस करना पड़ेगा, लाइक वी कैन फेस लाइक सती प्रथा। ओके, जो हमें क्या करना पड़ेगा, सती प्रथा फेस करना पड़ेगा कि हमें जो है जब वो चीज उनके पति का डेथ हो जाता है तो उन्हें क्या होता है, उन्हें जो है उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है, उन्हें आत्मदेह पूरा जो खुद को जलना पड़ता है। ये ऐसी कुप्रथाएं जो है वो फेस करनी पड़ती। देन सेकेंड थिंग, वी ऑल्सो फेस द लाइक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज जो असमानताएं भी हमें फेस करनी पड़ती, हमें हमें कम तवज्जो दिया जाता एज ए लाइक ह्यूमन, जो सॉरी वुमेन, और जो है उन्हें और सोसाइटी में बाकी के जो मेल मेंबर्स हैं उन्हें ज्यादा करना पड़ता, वही हर चीज संभालते। ठीक है, और जो हम क्या फेस कर सकते थे, लाइक सपोज और हम एज ए लाइक वुमेन हम सब फेस कर सकते थे, लाइक कि जैसे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता, कास्ट सिस्टम फेस करना पड़ता, इसके बाद सती प्रथा फेस करना पड़ता, और अर्ली चाइल्ड मैरिज आल्सो फेस्ड बाय ह्यूमन इन अर्लियर टाइम्स। सो ये भी चीज हमें फेस करना पड़ता। तो हम अपने जिंदगी को सुधार नहीं पाते, बल्कि और जो बिगड़ता जाता हो और वो चीज खराब होती जाती। तो लाइक ऑल दिस लाइक systems in earlier times in our society. So like, okay student, so this concept clear now? This is like a question for you, so you have to like solve.
So very good. So now one story for you, like a story for like Hima. Okay, so like you have to like um, observe this particular story and you have to read this, and then we have to like whoa, then we have to uh, understand that particular story. Okay student, so now जैसे कि अगर हम बात करें तो Hema was born in year 1980, 1902, and when she was like 15 years old, she was married off to a far village, and then she faced lots of trouble and like struggle during that time, because but she thought that maybe this is the future of every girl. But slowly there were like improvements, and she started reading newspapers and read more about the women who are facing same issue as her various villages. Telephone also arrived, and she started sharing her situation of a struggle with her mother over the phone. Slowly situation started changing as Hima started discussing about her struggle on open forums, and they got printed and magazines and like pamphlets. तो जैसे कि एक हेमा के बारे में बताया गया है, उसने एक आवाज उठाया, या फिर कह सकते हैं कि उसने जो कैसे उसके साथ सिचुएशन हुआ, उसने एक दूसरे से शेयर किया, बताया उसे, फिर जो है उसे अपने दुखों को साझा किया एक दूसरे से। हम कह सकते हैं कि लाइक वी कैन शी लाइक उसके बारे में बताया कि लाइक शी गॉट मैरिड ऑफ टू लाइक फार विलेज, उसको बहुत दूर कर दिया गया है शादी, एंड देन लाइक शी फेस्ड लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स in your in her life. Okay, and then that maybe this is the like future of every girl. उसका ये सोचना हो गया था कि क्या ये सभी जो लड़कियां हैं उनकी भी ऐसी जिंदगी होती होगी। दैट्स दैट। तो बट जो ये चीज फिर उसने जो है जैसे कि यहाँ बताया गया लाइक फिर दिस फ्यूचर ऑफ एवरी गर्ल, बट स्लोली देयर वर इंप्रूवमेंट्स एंड शी स्टार्टेड रीडिंग। उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि नहीं मैं तो पढ़ूंगी लाइक से। फिर एंड देन लाइक न्यूज़पेपर रीड मोर अबाउट द वुमेन्स हु आर फेसिंग। उन्होंने और गहराई में पढ़ा, और जो एक समस्या है या फिर जो प्रॉब्लम है, जो एक रिजिड प्रॉब्लम है, उसको जानने की कोशिश किया। फेसिंग सेम एंड इशू एंड ही हर वेरियस विलेजेस। फिर उसने देखा कि ये चीज तो ज्यादातर लोग फेस कर रहे हैं, ज्यादातर जो सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं वो फेस कर रही हैं। टेलीफोन्स ऑल्सो अराइव्ड एंड शी स्टार्टेड शेयरिंग द सिचुएशन। और जो जैसे उसका कॉल आता गया और उसने भी अपने माता जी को बताना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं। और इसके बाद जो ये चीज जो है वो मैगजीन्स और इन सब में भी आउट होने लगी। तो लाइक ऑल दिस इज particular story about Hema. So I think this is clear now. So now you have to like first of all, like you have to observe this particular pictures and tell me what comes in your mind. Yes students, as you can see like this particular picture, like teenies fails to consider a suffrage vote, and then the Indian ladies magazine, okay, from Raj to Swaraj, and love and marriage, and then like all these related to particular thing. So like we can say that this particular all this related to like towards the change, working towards change, कि क्या क्या चेंज आए हमारी सोसाइटी, लाइक अपने ह्यूमंस जो वुमेन्स है उसके लिए। लाइक हमने देखा कि from the early 19th century we find debates and discussion about social customs and practice taking a new character. And then like one important thing is also reason for this was the development of new forms of communication. For like the first time books, newspapers, magazines, like leaflets and like pamphlets were printed. Okay, and then these are far cheaper and far more accessible. Therefore ordinary people could read this, and many of them could also write, express their ideas in their own language. तो इसमें क्या हुआ कि ये जब ऐसे सोसाइटी में आने लगी, जो प्रिंट होने लगी, तो वो चीज आपस में अपना विचार जो है, जो समस्याएं हैं, जो डिबेट था, जो एक जो वो था मुद्दा था, वो चीज आने लगी सबके सामने। एंड ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन्स could now be debated and like discussed by men, become linked to movements of social changes. और लोग जो है उसको वो चर्चा में लाने लगे कि आखिरकार ये समस्या हर चीजों को फेस करना पड़ा, तो ये जो है ये समस्या काफी बड़ी समस्या है। so like all these, okay students,
तो ये सब काम होने लगे मतलब बदलाव के लिए। इसके बाद जो हम बात करें तो लाइक इसके बाद जो हमारी सोसाइटी में रिफॉर्मर्स आए, जो उन्होंने बदलाव किया हमारे सोसाइटी में। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स you can also know that Raja Ram Mohan Roy. So who is this? So we discuss in like detail. First of all, he founded a reform, like उन्होंने society में बदलाव ला, like association known as the Brahmo Sabha or Brahmo Samaj, later known as the like Brahmo Samaj in Calcutta. And then they thought, socha that the best way to ensure such changes was by like persuading people to give up old practices and adopt new way of life. उन्होंने जो ओल्ड प्रैक्टिस को उन्होंने चाहा कि ये रिमूव हो और एक नई प्रैक्टिस जो हमारी सोसाइटी में आए। उनकी जो एक माइंडसेट थी लोगों के प्रति, वो चाहते थे वो बदले लोगों। एंड देन लाइक राम मोहन रॉय वाज टेकन टू स्प्रेड द नॉलेज। उन्होंने जो एक ज्ञान का जो उन्हें उनको विस्तार उनको बढ़ाना शुरू कर दिया उन्हें, क्योंकि उनको पता था जब तक सोसाइटी में एजुकेशन नहीं आई तो रिफॉर्म नहीं आ सकता, बदलाव नहीं आ सकता। वी कैन नॉट like change our society without education. Okay student, so like this, so Ram Mohan Roy was taken to spread the knowledge of western education. तो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को भी बताया कि देखो जो पश्चिमी देश है संस्कृति है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ सब इक्वल है, ठीक है, वहाँ ऐसे राइट्स नहीं है। हम जो रूढ़िवादी लोग हैं, हम लोग का मानना ये हो गया कि जो हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं है। इस चीज को हमें नेगलेक्ट करना चाहिए, इस चीज को हमें रिमूव करना चाहिए ताकि हमारा सोसाइटी डेवलप हो, लोग और आगे बढ़े, है ना। जो हमारा कंट्री है उसका नाम आए विश्व स्तरीय पे, ये सब वो चाहते थे। लाइक राम मोहन रॉय वाज टेकन टू स्प्रेड द नॉलेज of Western education in the country and the bring about the greater freedom and equality for women. जो उनके भी जो जो औरतें थी उनके लिए भी वो चाहते थे समानता है एजुकेशन, मतलब जो हमारे सोसाइटी में उसके लिए वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वन इज दैट लाइक एजुकेशन इज ओनली वेपन जिसके द्वारा मतलब उसके द्वारा ही हम जो बदलाव ला सकते हैं अपने सोसाइटी में। देन ही रोट अबाउट द वे वुमेन वेर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, okay, and then like confined to the home and kitchen and not allowed to move and or they become educated. तो उनको उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा अपने उसमें कि कैसे एक जो हमारी भारत की जो महिलाएं हैं उनके साथ ऐसी चीज हो रही। एंड देन उन्होंने जो पर्दा जो है फास्ट किया, उन्होंने बताया। एंड देन लाइक डोमेस्टिक बर्डन ऑफ डोमेस्टिक, उन्होंने बताया कि कैसे एक घरेलू दबाव रहता है महिला पे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। they have not get any right of education to speak freely. So all these like faces, तो उन्होंने जो राजा राम मोहन राय जी उन्होंने इन चीजों का उन्होंने वो किया, और उन्हें जो ब्रह्मो समाज कह सकते हैं कि उनका संस्थापक थे। तो उसके बारे में so now student, like we discuss all these things about like Brahmo Samaj as well as like Sati Pratha and the condition of the women in our society. So one question for you. Question is like, do you think there is a link between education and reformance, reformation in the social issue and like inequality faced by the women? क्या आप सोचते हो कि ये जो लिंक है एजुकेशन का, रिफॉर्मेंस इन द सोशल इशू एंड इक्वालिटी ऑफ फेस्ड बाय वुमेन, क्या ये ऐसा काम करेगा जो लिंक बन पाएगा? तो यस, लाइक वी कैन से दैट लाइक विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन जो हम अपने सोसाइटी में जो एक बदलाव ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो ये जो एक एजुकेशन का लिंक है, डू यू थिंक देयर इज अ लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड रिफॉर्मेशन इन द सोशल इशू एंड इनइक्वालिटी फेस्ड बाय द वुमेन? तो ये जब तक हम एजुकेशन को स्प्रेड नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, we able to like remove the all the like जो कुप्रथाएं, तो ऑल दीज कुप्रथाएं, और फिर लाइक कह सकते हैं कि जितनी भी जो अनफेवरेबल एक्टिविटी है जो हमारी सोसाइटी में, उस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ लाइक अवेयरनेस, विद द हेल्प ऑफ लाइक जो कह सकते हैं कि give them equality, or with the help of give them कह सकते हैं कि सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ही हम चीज जो है वो बदलाव ला सकते हैं। तो one thing is like very important that like in education, with the help of education we can so we can like able to like reform in our society, तो बदलाव हम ला सकते हैं।
Okay, so I hope this thing clear for you. Yes, students. Yes or no? That's very good. So now move further. So like one question for you, test your understanding. So first question is like Brahmo Samaj in Calcutta was founded by Dash. So like what is your answer? What do you think, students? Like we discussed earlier in previous slide also. Yes, very good. So Raja Ram Mohan Rai was founded by Brahmo Samaj in Calcutta. Okay, so third option is correct. Okay, student, very good. So now we have to like move on. So now, student, how did newspaper, debates, pamphlets, and like magazine help in breaking the norms and improving the social status of India? What do you think? Like we can say that with the help of newspaper, we spreading the news. Yeah, we spreading the information. We spreading the issue among the people, among the society. तो with the help of like magazines, तो इनसे जो है जो जिन लोग जो अवेयर नहीं है इस इशू से, उनके बारे में पता नहीं, तो उन तक ये बात पहुंचे ताकि सोसाइटी में एक जो कह सकते हैं बदलाव आ सके. तो लाइक विद द हेल्प ऑफ वो न्यूज़पेपर्स, विद द हेल्प ऑफ लाइक debates, with the help of like pamphlets and with the help of magazines, we are like breaking उनको जो नॉर्म्स है उसको तोड़ सकते हैं, इम्प्रूव द सोशल स्टेटस, जो सोशल स्टेटस उसमें बदलाव ला सकते हैं. ओके, और उन्हें जो उनका जो हक है उनको हम दिलवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस लाइक मीडिया. ओके, थ्रू मीडिया लाइक एंड देन अब तो जैसे कि करंट सिचुएशन है, जैसे कि हम देखते हैं कि इन टुडे टाइम विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया वी लाइक वी कैन एक्सेस ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. हम किसी चीज को एक्सेस इजिली कर सकते हैं, किसी चीज को जो है स्प्रेड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको लाइक उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. ओके, तो लाइक ऑल दिस थिंग. So this thing clear for you? Yes, very good. So now move forward. So you have to like observe these particular pictures and tell me what comes in your mind. Yes, student. Like this woman died recently. Like this woman husband died recently, and then according to you, what like consequences, like consequences she has to face? What type of consequences like she has to face? Like अगर उसके पति मर गया तो like she faced a lot of problems. सोसाइटी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. इस जो विषय है जो खुद को जो है कह सकते हैं कि एक इनको अपना रोजगार ढूंढना पड़ेगा कि पूरी फैमिली की जो मेंटेन है ये इन पे आ जाएगी. तो लाइक ऑल दिस प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस वुमेन. ओके, सो लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट टॉपिक. सो लाइक जैसे कि हम देखते थे कि हमारी सोसाइटी में लाइक ऑल दिस कह सकते हैं कि जो कुप्रथा है वो चलाया जाता था, सती प्रथा लाइक कंसिडर, तो उन्हें जो है उन्हें जलना पड़ता था लाइक दिस टाइप. So students, move for next. So like changes the lives, or like we can say that of widows. जो उसके जो विडोज थे, जैसे हमने देखा उस विडो थी वो मर चुकी, उसका जो पति है उसका डेथ हो चुका है, तो वो क्या फेस कर सकते हैं. तो ऐसे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज कैसे चेंज हुआ. लाइक उसमें जो फर्स्ट रिफॉर्मर आए जो हमारे लाइक इंडिया के, जैसे हम कह सकते हैं राजा राम मोहन रॉय. लाइक फर्स्ट रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय लाइक बिगन लाइक कैंपेन, जो कैंपेनिंग है उसने अगेंस्ट द सती, उसके के लिए तहत मतलब उसने शुरू किया. एंड देन लाइक सेकंड इज like studied संस्कृत, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज. उन्हें जो है ये चीज पढ़ाना उन्हें चाहा कि ये सीखें. एंड ही शोड दैट लाइक एंशिएंट टेक्स्ट हैज नो प्रूफ्स ऑफ विडो बर्निंग. और उन्होंने ये बताना चाहा अपने टेक्स्ट के माध्यम से, उसके माध्यम से कि जो हमारे पहले की भी बुक्स में या फिर हमारे जो साहित्य में, लिटरेचर में ये कहीं मेंशन नहीं है कि जो जो विडो है उसको जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो जो जिनके पति की डेथ हो गया उसको जो है जला दिया जाए, या फिर जो उसे सती प्रथा का
मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी, ये हमें कहीं मेंशन नहीं है। तो लाइक राजा राम मोहन राय spread this type of like awareness among the people, among the society. Okay, so ये चीज कर रहे थे वो। इसके बाद बात करें तो लाइक ब्रिटिश आल्सो लाइक सपोर्टिंग हिम। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनका भी यही मानना था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, लाइक दे हैव गुड एजुकेशन, उनके पास अच्छी शिक्षा थी, तो इनका जो माइंडसेट था वो भी अलग था। एंड देन अगर हम बात करें 1829 सती सिस्टम वाज बैंड, और इसके बाद आखिरकार जो वो ऐसा सुनहरा मौका या फिर कह सकते हैं को एक अच्छा जो दिन आ गया जब सती प्रथा जो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो उसको गलत मानने लग गया, क्योंकि ये चीज लाजमी था और मानना भी था। एंड ही वांटेड विडो मैरिज, एंड और उन्होंने जो चाहा कि जो विडो है उसे भी अपने जीवन जीने का अधिकार है। क्या जैसे कि अगर अकाल कुछ हो गया है, फिर ऐसा कुछ हो गया, तो क्या उसका जीवन खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नो। तो इन सब चीजों का उन्होंने रिफॉर्म करना चाहिए अपने सोसाइटी में अंदर, जो राजा राममोहन है। एंड सेकंड रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाइक दे सजेस्ट लाइक विडोज कुड रीमैरी, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया। एंड देन 1856 लॉ पास्ड फॉर विडो रीमैरी, और आखिरकार ऐसा हुआ कि 1856 में ये कानून भी पास हो गया कि जो विधवा है उन्हें फिर से पूर्ण विवाह करने का अवसर दिया जाए। एंड देन he was boycotted by many peoples, and then like Britishers support his ideas, जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनके आइडियाज को, उनके जो वो थी उनको भी सपोर्ट कर, क्योंकि दे हैव लाइक गुड एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो पढ़े लिखे थे, उनकी जो एक माइंडसेट थी वो अलग थी। तो जब ये रिफॉर्मर्स आए, ये जो कह सकते हैं, जो फर्स्ट वन इज राजा राम मोहन राय एंड सेकंड वन इज रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर। So like all these two, like they like wanted to change the mindset of our society, and they spread like information, they spread awareness among the people, among the society. So ये काफी अपने उन सब चीज से चाहते थे कि लोग प्रभावित हों, लोग जागरूक हो सके। एंड लाइक रीड ऑफ लॉर्ड टेक्स्ट ओल्ड एंड एंसेंट, और जो उन्होंने खूब सारा जो एंसेंट टेक्स्ट था, जो हमारी रिचुअल टेक्स्ट थी, वो उन्होंने पढ़ा और लोगों तक ये बात पहुंचाया कि जो ये जो हमारे टेक्स्ट में भी ये चीज मेंशन नहीं है कि जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उन्हें इन सब चीजों का अधिकार ना मिले। दे ऑल्सो हैव राइट टू get education, they also have right to get good life. So all these things, okay. And then third performance like Dayanand Saraswati, and then came in like second half of 19th century, part of Madras presidency. And then like second one is like founded association of Arya Samaj in North. तो थर्ड जो हमारे रिफॉर्म थे वो दयानंद सरस्वती, ये इनका जो टाइम पीरियड था ये सेकंड हाफ से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में, और पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के भी भाग रह चुके हैं। एंड देन फाउंडेड एसोसिएशन, जो इसके संस्थापक थे आर्य समाज के। ठीक है, एंड देन लाइक फॉर्म्ड वेरियस एसोसिएशन टू अलाउ विडो रीमैरिज। ही इन्फ्लुएंस्ड लाइक वर्सालिंगा पंटलू and reformed in Hindustan after 1857-5. So I hope this thing clear for you. Yes, students. Yes or no? Yes, very good. So we can move further to next topic. Yes. So yes, student. One question for you, like if you are part of campaign which supports widow remarriage and like abolish sati system, what measures will you will you take to improve the condition of widowed women? So like we can say that so many different taken to because of the historical women all over the world has faced to like similar set of like issues during different like periods, like inferior like status in society, lack of education, early marriage, being forced, or like out of public like poor condition of widow. तो like all these, तो एक like हम बात करेंगे तो इनमें जो है हम इन्हें ये कर सकते हैं कि adopt like social and economic reforms to like improve widow access. And we can also like say that access to like lands, pensions and other social protection instead the like physical like facial like and जो एक डिस्क्रिमिनेटरी है या फिर जो उनमें वो है वो हम चाहेंगे उसे वो खत्म हो हमारे उसमें, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीज जो हम चाहेंगे वो एक कदम उठाना
ताकि जो है हमारे समाज में बदलाव आ सके. Okay, student. So now move further. So this is some question for you. You have to like participate in this. You should participate in this particular activity. So the Anand Saraswati is like who? So like established Arya Samaj. Yes, very good. And like Raja Ram Mohan Roy. Very good. Formed Brahmo Samaj. Very good. And like Dayanand Saraswati. And Ishwar Chandra Vidyasagar. Yeah, supported like widow remarriage. Very good, students. And Dayanand Saraswati. Like Dayanand Saraswati, he influenced the Britishers. तो ये काफी ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, because they have good knowledge, they have like a different mindset towards society. And then like Raja Ram Mohan Roy used text from the books to explain the answer to the locals. उन्होंने सोचा कि ये अवेयरनेस है जो among people को फैलाना चाहिए ताकि जो लोगों में बदलाव आ सके. Very good, student. So this is correct. So in this like in this today class we discuss about like caste systems in our society as well as the condition of women in Indian society earlier times also. So all these things, and then we can also discuss like so many different reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar, and then we also discuss Dayanand Saraswati. Okay, so all these things. Raja Ram Mohan Roy. So some question for you for recapitulation purpose. I hope you can answer. So like first is like 100 to 200 years ago, there was a practice of dash and dash. Like so which type of practice found by in like in earlier times, 100 to 200 years ago? Yes, student. What is your answer? That's very good. Sati Pratha and like early child marriage. Very good, student. This is correct answer. And remarried, like child remarried. Okay. Okay. And then इसके बाद हम कहें तो was faced by the women and no access to education or right to vote was also like prominented. And in the start of the dash century, things began to change and reform like Britishers also supported. तो कब जो हुआ ऐसा रिफॉर्म होने लगा, चेंजेस होने लगे, वो कौन सी ईस्वी में था? Like what do you think, student? Yes, very good. 1829. 1829 में जो है वो चेंज होने लगे इंस्टीट्यूशन. दिस थिंग टू बिगिन टू रिफॉर्म आने लगा हमारे समाज में. ब्रिटिश जो भी है इस चीज को सपोर्ट करने लगे, जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेजी, तो वो भी सपोर्ट करने लगे. सपोर्टेड लाइक राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय को सपोर्ट करने लगे. एंड ही एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता. कहाँ उन्होंने, जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापक कहाँ किया था? कलकत्ता. ठीक है, कलकत्ता. एंड देन लाइक अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन इज लाइक सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड इन डैश. यस स्टूडेंट्स, like Ishwar Chandra Vidyasagar, and after that widow like remarriage was introduced by Ishwar Chandra Vidyasagar, and like the reform association called Dash also supported widow remarriage. Yes, very good, students. So all this about. So now you can like this is homework for you. Like you have to read this. Like first question is like universal adult suffrage was a like break point in the history of women. Find such more issues that women had to face back in earlier times and write about the role of social reformer and government in improving them. Okay, students. And then second question is like draw a poster highlighting negative impacts of like sati system and child marriage. Also write a catchy slogans to like change the mindset of people, which will be help changing, reforming the social issue faced by the people. So you have to like you have to work for this like homework. So this is all about from my side. Thank you so much, student. Thank you.